आज तक के इस खास प्रोग्राम में आ चुकी है तुलसी कुमार भी। और तुलसी, क्या मेमोरीज है लता दीदी से रिलेटेड? कितना याद अभी भी सब उन्हें याद कर रहे हैं, उन अभी भी वो अपने हमारे दिलों में जिंदा है, तो क्या कहेंगे? um, मुझे मौका मिला लता जी से मिलने का इन द ईयर 2009। और मेरा तब डेब्यू एल्बम रिलीज़ हो रहा था, लव हो जाए, और मैं उनके घर गई थी उनकी ब्लेसिंग्स लेने, और वहाँ उनसे कुछ टिप्स भी मिले मुझे सिंगिंग के। तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा यादगार लम्हा रहेगा विथ लता जी, बिकॉज दैट्स द ओनली टाइम आई गॉट टू मीट हर। बट बचपन से जब से म्यूज़िक का शौक़ शुरू हुआ, लता जी के गाने साथ साथ शुरू हुए। सो उनके गाने सुनते सुनते ही बड़ी हुई हूँ, सीखा है बहुत कुछ। सिर्फ मैंने नहीं, आई एम श्योर जितने भी तमाम सिंगर्स हैं वर्ल्ड वाइड, या जो सिंगिंग फील्ड में आना चाहते हैं, सभी ने, लता जी इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूशन ऑफ म्यूज़िक। और उनको मैं हमेशा इज़ ही बोल पाऊँगी, मेरे मुंह से निकलेगा नहीं कि वो अब हमारे बीच नहीं है। बट उनकी वॉइस इज़ गोना बी इमॉर्टल एंड इट्स गोना स्टे इन आवर हार्ट्स फॉर एवर। उनके फेवरेट सॉन्ग्स कोई जो आपके भी फेवरेट हो, जो आज गुनगुनाना चाहो? मेरा पर्सनल फेवरेट उनका जो गाना है, आज मैं वो ही गाना परफॉर्म करने वाली हूँ, वो है एक प्यार का नगमा है। टू लाइन्स। हम्म, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी आज तक की इस पहल के लिए, श्रद्धांजलि जो लता दी के लिए की? आई थिंक लता जी ने जो कुछ दिया है इंडस्ट्री को, हम सभी उन्हीं की बदौलत हैं। आज पूरी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी उनको इतना मानती है, तो आई थिंक बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आज तक ने, कि आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। Music has been an intrinsic part of Tulsi's life, and Tulsi Kumar is a name that has become synonymous with melody, with original songs, with compositions that have stayed in the hearts and minds of fans. She's here with us today for a very special moment, for a very special show. Tulsi, I want to first start by talking to you about your memories of Lata ji, and she's been an influence on everybody's life, right? At the young age when you started realizing that okay, music is something you want to move towards, how has Lata ji influenced your life? आई थिंक लता जी ने सिर्फ मेरी लाइफ नहीं, जितने भी, हाउ मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु आर wanting to learn music or who love music, they have been very closely been you know listening to Lata ji, and so have I. So Lata ji has been an integral part of my journey. I remember जो मैंने पहला गाना ऑडिशन किया था इन फ्रंट ऑफ अ माइक्रोफोन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वाज लग जा गले। आई नो बहुत टफ गाना है, बट उससे वो मैंने उस टाइम से सीखना शुरू किया। आज भी उसके नोट्स मैं अच्छे से सीख रही हूँ, बिकॉज इतनी सारी बारीकियाँ हैं। एंड नॉट जस्ट वन सॉन्ग, आई थिंक लता जी का हर गाना इतना खूबसूरत है, चाहे वो फील हो या उसकी हरकतें हों या जो भी छोटे कण मुर्कियाँ, जितनी भी वो चीज़ों से गाने को सजाती थी, आई थिंक देयर इज़ लॉट टू लर्न, एंड शी इज़ लेफ्ट एज अ लेगेसी। Absolutely. You mentioned legacy, which is a very important part, important word that we say when Lataji is there. I want to speak to you a bit about preserving this legacy. What are your thoughts on that? There is so much archival music of hers, tapes before the advent of the internet, there were recorded tapes. Any thoughts on preserving her music? I think her music will stay with us in every way possible. It's about keeping the records, or today hearing them digitally on various platforms. Singers will come, singers will go, but there will never be another Lata ji. And all the gems, because जिस ज़माने में वो रिकॉर्ड किया करती थी, जिस तरीके की रिहर्सल्स हुआ करती थी एक एक गाने पे, तो जिस तरीके का प्रिसिशन आता था, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी ऑल हैव रेड। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, मैंने भी देखा है। तो आई थिंक वो सब चीज़ें प्रिजर्व करते हुए, ऑब्वियसली उनका म्यूज़िक हम सबके लिए एक इंस्टीट्यूट की तरह है दैट वी हैव टू प्रिजर्व एंड कीप। एंड
आने वाली decades भी वो सुन के बहुत कुछ सीखेंगी. Right. You also come from a family that has a legacy in music, right? Your entire family is involved in music, playback singing, singles. T Series brought the whole concept of singles in the market and has aced it. Talking about that, I want to understand from you as a playback singer, because you've done chartbuster music for films, right? What is your thought process when you enter the booth? When you're trying to sing a song, because you also know there is, say, an actor, there's a Katrina or a Priyanka or whoever's voice that you're going to be. How do you mold yourself mentally to become the person, become the voice? See, I've always said playback singing is like emoting and acting uh, for the character. So whether I definitely try and ask and get details that which singer, which actress is the song going to be on, and depending upon the mood and genre of the song, also I give my voice those tweaks and that tonality. So yeah, work on it as per what situation the song would be coming on when the particular character is on screen. So I think all these things has helped me over the years understand. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं इस पूरे प्रोसेस से एंड कहीं ना कहीं ये टीचिंग इट कम्स फ्रॉम the way Lata ji used to render, because I have read so many of her interviews where she has said that she used to understand the situation and get to know which actress she's rendering the song for. Right. My last question to you is, we are in 2022, an age where a lot of older songs are being redone and remade with new melodies, right? To obviously cater to the younger generation, a generation perhaps who hasn't heard those tracks. What are your thoughts on that? I've always said that recreations and doing songs, firstly, the iconic songs, when they are touched, they need to be handled with a lot of care, because those are our iconic songs, and recreations have to be done beautifully so that the song gets enhanced and can reach today's youth. That's the reason recreations are being made, because they are being heard by the audiences. So as long as they are dealt with care and they are, the resonance and the melodies are kept intact without tampering too much, I think it does resonate to some extent with the audiences. I think that's a great thought and a unique take on remixes and all of that. On that note, Tulsi Kumar, thank you so much for speaking to India today.